2015 promises to begin on a big political bang, what with Delhi elections just round the corner. The Congress somewhat realistically seems to have ruled itself out, with Sheila Dikshit even hinting that it could support the Aam Aadmi Party if that support is needed. So what it really boils down to is a battle between two parties, the Aam Aadmi Party and the BJP, and also between two powerful personalities, Narendra Modi and Arvind Kejriwal. Now both are great communicators, both are master strategics, both have also mastered the art of the social media. And whereas Narendra Modi is flamboyant and powerful, Arvind Kejriwal is quietly determined. So this week in Cover Story, we are going to be doing a curtain raiser on what promises to be a very, very interesting battle for the capital. It does have a feeling of deja vu in more ways than one. Not only is this a sort of Varanasi redux, but within a year of casting his ballot, Delhi is all set to go to polls again. The last encounter, if you recall, threw up a hung assembly and a 49-day chief minister. This time round, former chief minister, a somewhat repentant Arvind Kejriwal, is keen to try his hand at the chief minister's chair again. आज मुझे कहने में कोई वो नहीं हो रहा कि हमसे गलती हो गई, भाई साहब माफ कर दो, हमसे गलती हुई, हमें उस समय इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, ये हमारी भूल थी, लेकिन अब हम उस गलती से सीखे हैं और आज मैं आप सब लोगों के सामने ये वादा करके जाता हूँ, दोबारा दिल्ली में सरकार बनाएंगे, अब कुछ भी हो जाए भाई साहब 5 साल तक इस्तीफा नहीं देना। आप मुझे बताइए, दिल्ली का 1 साल बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? 1 साल तबाह हो गया कि नहीं हो गया? ये दिल्ली को जिन्होंने 1 साल बर्बाद किया, उनको सजा करोगे कि नहीं करोगे? जिन्होंने आपके भविष्य को 1 साल पीछे छोड़ दिया, उनको सजा करोगे कि नहीं करोगे? यही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को अस्थिर कर दिया है। जिन्होंने दिल्ली को अस्थिर किया, उनको कभी वो पलट मत देना भाइयों बहनों। He is busy issuing advertisements claiming that he did not run away but resigned due to lack of a full mandate. I think Kejriwal has a real problem in that we know of Kejriwal as a man who protests. He protests because there is no right to information. He protests because there's too much corruption. He protests because Anna Hazare hasn't eaten lunch for 2 months or whatever. So he's that kind of guy. What we've had to see from Kejriwal is whether these protests can translate into action. Is he a man who can deliver? Is he a man who can do things? Is he a man who can administer? And the fear many people had, many people within his own party, I think, is that as chief minister he would fail to deliver and they would lose all credibility. Therefore, from their perspective, this whole stunt-based chief ministership that he had when he went on dharnas and he attacked his own police force and then ran away, etc., suited them because they kept this image of Arvind, the people's man, protester alive. What they didn't realize, I think, is that people are saying it's not enough to be Arvind, the people's man. Prove to us that you can deliver something for the people. So far, at least, that proof is lacking. The Aam Aadmi will certainly occupy centre stage once again, but this time they have a tough challenge from Narendra Modi and the BJP. It seems as if the party has decided to go without a CM face, though there are rumours that Smriti Irani may be a last-minute surprise choice. But what party strategists are planning is to fight the elections under Narendra Modi's banner and charisma. After all, as the capital city, the government of Delhi is one that most reflects the government at the centre. So the plan seems to be to follow the Haryana and Maharashtra model and declare chief minister only after the results. मैंने तो सुना था थोड़े दिन पहले मीडिया में चलता था जगदीश मुखी सीएम बनेंगे। अब आपके पोस्टर्स में तो जगदीश मुखी आ रहा है। इसीलिए हमने पोस्टर लगाया। आज अगर आप ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी और हर्षवर्धन, either of the two are good faces. हम चाहेंगे कि हर्षवर्धन या स्मृति ईरानी वर्सेस अरविंद केजरीवाल की तुलना करें दिल्ली वाले और उसके हिसाब से वोट करें, क्योंकि अल्टीमेटली दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठेगा, दिल्ली की पॉलिसीज उस हिसाब से बनेंगी। हरियाणा में जो हो रहा है वो मोदी साहब चाहेंगे कि हर्षवर्धन या स्मृति ईरानी वर्सेस अरविंद केजरीवाल की तुलना करें दिल्ली वाले और उसके हिसाब से वोट करें, क्योंकि अल्टीमेटली दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठेगा, दिल्ली की पॉलिसीज उस हिसाब से बनेंगी। हरियाणा में जो हो रहा है वो मोदी साहब के हिसाब से नहीं हो रहा है। अभी हरियाणा में जो कुछ हो रहा है वो खट्टर साहब के हिसाब से हो रहा है। हमें कोई जरूरत नहीं है
सीएम फेस निश्चित रूप से पिछले जो हमारे 4 चुनाव हुए हैं उसके अंदर हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर और फिर जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे नेता एक ही हैं और वो हैं नरेंद्र मोदी जी। ऑफ कोर्स मोदी जी को दिल्ली का सीएम नहीं बनना, लेकिन विजनरी जो है, विजन जो है वो हमारे एक ही नेता का है। सेनापति एक ही होता है, लीडर एक ही होता है। Will PM resign and run for CM? Are the coming elections meant for choosing the Chief Minister or the Prime Minister? Modi increasingly is a distant idea. He is batting away from public consciousness. Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal are proximate, immediate, available within among the people of Delhi. लोगों को आज मोदी जी के ऊपर विश्वास है कि भाई मोदी जी अगर ऊपर हैं और उनकी ही पार्टी दिल्ली के अंदर भी आती है तो जनरली ये तालमेल से काम होगा। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो बेटर तालमेल से काम होगा। और वैसे भी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, पुलिस, डीडीए ये सब केंद्र के पास है, तो इस समय तालमेल की बहुत जरूरत है। नई नई योजनाओं को लाना, डेवलपमेंट को लाना। दिल्ली देश की राजधानी है तो लोग इस बात को समझते हैं कि कोई एक स्कूटर हो और उसके अंदर एक पहिया लगा दें आप वेस्पा का और एक लगा दें लमरेटा का तो वो डगमग डगमग चलेगा। तो दोनों पहिए एक ही कंपनी के लग जाएं तो मैं समझता हूँ अच्छा चलेगा जी। Thank God they have admitted that there is no face except their Prime Minister, Mr. Modi. While the BJP is keen to ride the Modi wave in Delhi, the R campaign has always been centered around the personality of Kejriwal. So the capital is all set to witness the clash of two powerful, larger-than-life political personalities. Problem with seeing the Delhi election as a Modi versus Kejriwal election is that the ideas both are putting out are at odds with reality. Modi has refused to nominate anybody as Chief Minister of Delhi, and all the hoardings say, Chalo Modi ke saath. The way you're supposed to go is not entirely clear to me. But the sense is that Modi is going to be Chief Minister of Delhi, which you and I know he's not going to be. Kejriwal, on the other hand, who could be Chief Minister of Delhi, was Chief Minister of Delhi, actually ran away because he had national ambitions and went to fight Modi in Varanasi with disastrous consequences. So here you have a Prime Minister who's pretending to be a Chief Minister. And the other case, you have a Chief Minister who wants to be a Prime Minister. It's a strange mismatch. No, they're two very different kind of personalities. I mean, Modi believes in economic development, highly centralized government, wants to have control, also has his own kind of religious beliefs and agendas and all that. Kejriwal is more of a disruptor, more of a heckler. He says that it'll be grassroots democracy I'll bring in. And he has got some fuzzy ideas on development and all that. So they're two different persons altogether. For the first time in a Delhi poll narrative, the Congress is not a player. Not surprisingly, it is yet to announce any CM face. The party has run out of not just workers but even leaders, with Sheila Dikshit stating that she does not want to contest in the next polls and Ajay Makhan withdrawing to the sidelines. A section of the party wants him to take on Kejriwal from New Delhi constituency, which used to be Sheila Dikshit's stronghold. But Makhan seems unkeen to take on what he fears would be a losing battle. His supporters say that he should have been given charge much earlier when Congress was still in power and not when it is in shambles. कि कांग्रेस ने अपने 10 साल के केंद्र सरकार के शासन में और 15 साल के दिल्ली के शासन के अंदर उन्होंने इतनी ज्यादा परेशानियां खड़ी करी है, ऐसी महंगाई हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, तो गवर्नेंस नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि जब कांग्रेस को जनता ने बुरी तरह से छोड़ दिया तो अब उनको वो डिमोरलाइज्ड हैं और उनको नहीं लगता कि वो जनता के सामने वोट मांगने जाने का भी उनका कोई हक है या वो मुंह दिखा सकते हैं। Yeah, the Congress has been in such a bad shape because it suffered major, not only in the Delhi elections but in the Lok Sabha election. So its candidates are not very enthusiastic. There's no leader, and he doesn't have a game plan of countering either Modi or Kejriwal. I think Congress in Delhi is in the middle of many changes. What we forget when we talk about Delhi is we act as though it was a Congress city. It was never a Congress city. It was a Jan Sangh city. It was a Punjabi, Bania kind of Jan Sangh that ran the city for many, many years. What Kejriwal has done
is to appeal to the migrants, the Biharis, the UPs, the people who'd helped the Congress the first time around. So the Congress has lost that constituency. The traditional Jansanghi constituency remains the Jansanghi constituency, whether you call it BJP or Jansan. And the other people, the educated people, the middle class, the working class, are just so disillusioned with the Congress and so fatigued by the years and years of Congress rule that they want to change. During the last polls, the AAP got 28 seats and the BJP Akali Dal alliance won 32, while the Congress was pushed to a humiliating third with just 8 seats. Both the BJP and the Aam Aadmi Party are demanding an outright majority. From the BJP's point of view, how can it hope to better its stakes when it did not sweep the assembly elections during the last polls at a time when the Modi wave was at its peak? But still, the party is hoping to do a repeat of its Haryana and Maharashtra polls depending on the same Modi magic. As for Kejriwal, well, he too is demanding an outright majority, despite the fact that he left the chief ministership halfway last time in order to try his hand at being prime minister. But once again, he is back, and he too says, "Dil mange more." Let's see what has changed for both these parties to dream so big. बातें बहुत सारी हुई, वायदे बहुत सारे हुए, लेकिन उस पर जो काम होने चाहिए थे वो निश्चित रूप से नहीं हुए। दिल्ली के लोगों ने एक नई सरकार यहाँ पर दी, जिस सरकार से भी लोगों को बहुत आशाएं थी, लेकिन उन आशाओं के लिए लोगों को निराशा ही हाथ में लगी। जिस तरीके से दिल्ली को बीच में छोड़ दिया गया और 1 साल के अंदर ही आज दोबारा से दिल्ली को चुनाव देखना पड़ रहा है। एक स्टेप था और वो हमारी एरर थी, लेकिन आप देखो दिल्ली में बिजली हमने सस्ती की, हमने भ्रष्टाचार खत्म किया, हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और फिर दिल्ली को हाईटेक लिविंग के लिए सिटी बनाना है। दिल्ली की जिंदगी में साइंस कहां से कहां पहुंच गई, हम लेके बैठे हैं वही पुराना 18वीं सदी की गवर्नेंस, उसको हाईटेक गवर्नेंस बना रहे हैं और हमने काम करना शुरू किया उस पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में 28 थे जी, 28 में तो जी इतनी चल सकती है, अब तो 36 दीजिएगा, हम 5 साल करके दिखाएंगे और इस बार 5 साल तक ठीक करके दिखाएंगे। The one wrong thing Kejriwal did, in my view, and I could be wrong on that, is overestimating his own popularity. I think he was startled, though he will not admit this, by the magnitude of his victory in Delhi. And he thought he could reproduce this on a national scale. Everybody who knows him says when he went to Varanasi, he genuinely believed he could beat Modi. He genuinely believed. There's one stand-up comedian, I've forgotten his name, who he put up against Rahul Gandhi. He genuinely believed that this comedian was going to win. Kumar Vishwas. He genuinely believed that these jokers and comedians were going to win and that he was going to be the man who vanquished Modi. He's now come back to earth. His ambitions are more modest, they're more realistic. So perhaps he's learned from that mistake. Both the AAP and Team Modi have mastered the social media and know how to sell a political story. Playing on the fact that the BJP does not have a tall leader in Delhi to take on Kejriwal, the Aam Aadmi Party came out with posters suggesting that this would be a battle between Kejriwal and BJP veteran Jagdish Mukhi. लेकिन एक दल ऐसा है जो हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री अपने आप ही तय कर रहा है। क्रिकेट में एम्पायर भी वही हैं, बैट्समैन भी वही हैं, बॉलर भी वही हैं, सब कुछ वो तय कर देंगे। ये संस्कृति दिल्ली की नहीं है। हम एक जिम्मेदार दल हैं और निश्चित रूप से एक जिम्मेवार सीएम समय आने पर आपको देंगे। Later, the BJP countered this by taking out radio advertisements where an old woman is lamenting the fact that she voted for Kejriwal, who ran away mid-government. Now, Kejriwal has countered with a radio spot pleading to the old woman to give him an outright majority. दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एफएम रेडियो पे एक बुजुर्ग महिला की आवाज सुनी। वो बहुत दुखी नजर आ रही थी क्योंकि उन्होंने मुझे वोट दिया और मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें लगा मैंने उनके वोट का सम्मान नहीं किया। आज मैं उन्हीं से मुखातिब हूँ। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि माता जी, मैं कहीं भाग के नहीं गया। कुछ ही दिनों में पूर्ण बहुमत लेके आपकी सेवा में फिर वापस आ रहा हूँ। This is clearly going to be a battle of the great communicators. Both Modi and Kejriwal are articulate, forceful personalities who know how to get their message across. They've also mastered the art of the new media and have teams that are quick and sharp with their responses. Oh, I don't think there's any doubt that Kejriwal is the far better communicator of the two. I think Modi communicates in a certain way, and there's a huge Modi machine with control rooms and managed Twitter and the Facebook and all of that. And it's massively financed, as we've seen, with private planes and all of that. Kejriwal is the Jerry in this Tom and Jerry situation. He's the guy with very few resources. To have got where he has with those very few resources is a major, major achievement.
While Kejriwal is sticking to Jan Sabhas and donation lunches, Modi has kicked off the BJP campaign with a grand rally in Delhi's Ramlila Maidan. और कुछ लोगों की कुछ काम में मास्टरी होती है, जिसकी जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। मुझे बताइए, जिसको गाड़ी चलाना आता है उसको खाना पकाना दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। और इसलिए भाइयों बहनों, सही व्यक्ति को सही काम देना, ये दिल्ली के लोगों की बुद्धि तेज है और अच्छा काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। एक सुशासन चाहिए, दिल्ली को व्यवस्था चाहिए, दिल्ली को जवाबदेह लोग चाहिए, जवाबदेह सरकार चाहिए। अनारकी से दिल्ली का भला नहीं होगा और दुनिया में हिंदुस्तान की छवि बर्बाद होकर के रहेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी जिम्मेवारी है, दिल्ली को बचाना भी है, दिल्ली को बढ़ाना भी है। AAP is hoping to counter Modi's flamboyance with a sustained but low-key campaign by Kejriwal. He has already held 50 Jan Sabhas and hopes to hold 60 more before the polls end. Modi has ordered all the 282 BJP MPs to campaign in Delhi, and each MP is expected to address 3 public meetings each. For its part, and with donations not coming as fast as last time, AAP has been recruiting student volunteers to campaign for it. It has also come up with a tele door-to-door campaign and a muffler game on WhatsApp. Kejriwal's political survival depends heavily on the Delhi results, while for BJP a loss could dent Modi's aura of invincibility. If Modi loses Delhi, I think there is a problem, because the last elections haven't gone according to plan. Mission 44 or whatever it was in Kashmir didn't really work out. They had visions of saying that even Muslims in the valley have voted for Modi because everybody wants development governance. Well, guess what? They didn't. It's the Hindus who voted for him in Jammu. Even Ladakh, where there are Buddhists, they didn't vote for Modi. If you look at the other elections, he's not really been able to succeed in Jharkhand, for instance, in getting a huge overall majority. It's the kind of clean sweep that only a Swachh Bharat campaign can maintain. It certainly wasn't done by any kind of electoral bare victory, a bare majority. He needs a big, successful victory in Delhi to indicate that the Modi wave is intact. My sense now, and remember, I'm a man who always gets elections wrong, my sense is he's going to get it. But it does matter. If Kejriwal loses this election, then he will be reduced to a small local player. That kind of pan-city or pan-Indian appeal which he had will go down. He'll be one of the many players here. For Modi, a defeat means it is the first jerk to the juggernaut affairs which has been rolling across India. I mean, he has been conquering new territories. Yes, Kashmir Valley, he could not win it, but nobody really expected him to do very well in Kashmir Valley. But the way he did well in Jammu, Jharkhand, Maharashtra or Haryana, this will be the first reality check for him. And yes, Amit Shah had famously said, oh, what is Delhi? It is just a corporation. It is nothing big. But in Delhi, always whoever holds Delhi has ruled well in the national level. So I don't think Kejriwal is finished even if he loses, because the opposition space now is wide open. The Congress has taken, I think, a deliberate decision that it will take a back seat, it will regroup, it will reorganize. And I don't think you will see much activity from the Congress for another year or so. So with that space left open, who's going to take it? Kejriwal is the obvious person to continue opposing. And if he loses in Delhi, which is possible surely, he will look in other states. I don't see this view that this is make or break for Kejriwal as being based on reality. A part of the BJP campaign is also to tarnish Kejriwal as a man who does not keep his word.
The party has compiled a list of 27 instances where it claimed that Kejriwal has done a U-turn. फिर उन्होंने कहा बंगला नहीं लेंगे, बंगला लिया। फिर उन्होंने कहा गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी लिया। जनता ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा इनको बंगला गाड़ी मत लो, इन्होंने Does not keep his word. The party has compiled a list of 27 instances where it claimed that Kejriwal has done a U-turn. फिर उन्होंने कहा बंगला नहीं लेंगे, बंगला लिया। फिर उन्होंने कहा गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी लिया। जनता ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा इनको बंगला गाड़ी मत लो, इन्होंने ही घोषणा की। तो भाई जो कहो वो करो, ये नहीं है कह कुछ रहे हैं और दिख कुछ रहे हैं। अब ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है ना, हम तो फैक्चुअली मैं आज भी कह रहा हूँ और मीडिया हैज टू करेक्ट इटसेल्फ। हमने और हमारे एफिडेविट्स में उठा के देख लीजिए, हमने कहा था बड़े बड़े सरकारी बंगलों में नहीं रहेंगे। आप कह रहे हो जी सरकारी बंगलों में नहीं रहेंगे। What is a बड़ा बंगलो? 6-6 एकड़ के बंगले। एक नेता को क्या जरूरत है 6 एकड़ के बंगले की दिल्ली में? आप देखो सैकड़ों बंगले बने हुए हैं, जाके आराम से रहो। वही एमपी फ्लैट में भी रहता है, एमपी फ्लैट्स भी बने हुए हैं, और वही एमपी 6-6, 10-10 एकड़ के बंगले में भी रहता है। This brings us to the main issues at stake. AAP seems to have sidelined the Lokpal issue in favor of more expedient and appealing promises such as free Wi-Fi and taking on corruption, price hike, electricity rates and problems of unauthorized colonies. Kejriwal may have lost the middle class vote with his politics of resignation, but he does retain goodwill amongst the slum dwellers and lower middle class voters. He also appeals to those who oppose the BJP and do not see the Congress as a viable alternative. अब गवर्नेंस के ऊपर एक दिल्ली डायलॉग आएगा अगले हफ्ते 10 दिन में होने वाला है। गवर्नेंस पे एक एजुकेशन हेल्थ पे होगा, एक गवर्नेंस पे होगा, एक रीसेटलमेंट। गवर्नेंस वाले में स्वराज का भी आएगा और लोकपाल का भी आएगा, दोनों आएंगे। यू विल सी दैट। No, the BJP vote bank was what it was in the last elections. The middle class, the upper caste, the people from Purvanchal, people from the northwestern parts of the country were settled in Delhi. And Aam Aadmi Party is looking more at the poor migrants from different states of India, the minorities to a certain extent, and also the committed middle class youth who are very angry with the policy paralysis, with the corruption and all that of the UPA era, you know. The BJP seems to have retained its middle-class Purvanchali and trader vote bank and is also reaching out to slum dwellers with its Jahan Juggi Wahan Makan promise. Traders are being handed statistics claiming there were more raids on small traders than liquor vendors during AAP's rule. But the BJP's main plank is that with the government at the centre, it is in a better position to synchronize and deliver development at the assembly level. A major coup is getting the Haryana government, which is currently ruled by the BJP, to release water from the Munnak Canal, thereby giving the Dwarka area around 40 million gallons of water per day. Earlier, the Haryana government had refused to release this water, citing shortages in its own state. But with Delhi posed around the corner, the central leadership seems to have prevailed on the Haryana CM. और आज ही जो हमने लगातार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर चूंकि अब बीजेपी के आए हैं उनसे बात की है कि मुनक नहर में पानी आना चाहिए, 80 MGD पानी दिल्ली को मिलना चाहिए। और आज उन्होंने ये माना भी है, कोर्ट के में उन्होंने ये हलफनामा भी दिया है कि वो इस पानी को दिल्ली को देंगे। तो दिल्ली की बड़ी एक समस्या पानी की होगी। अब झुग्गी झोंपड़ी के अंदर हमने ये कहा है, बीजेपी का है ऐलान, जहां झुग्गी वहीं मकान। तो जैसे मुंबई के अंदर मल्टी स्टोरीड फ्लैट बन रहे हैं झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए, उसी तर्ज पे शहरी विकास मंत्रालय के हमारे वेंकैया नायडू जी ने ये घोषणा की है कि हम भी उसी तर्ज के अंदर झुग्गी झोंपड़ी के ऊपर मकान बना के देंगे। And finally, before signing off, let's now talk to the real stakeholders of Delhi, the citizens of Delhi, and find out what they want from a new government. Rathod साहब, ये new government से आप क्या चाहते हैं? What should be the main priorities? पिछले एक्चुअली 1-1.25 साल से 1.5 साल से जो दिल्ली में कोई गवर्नमेंट नहीं थी, इस वजह से पीपल आर सफरिंग। बेसिक एमिनिटीज जो है लोगों को वो कोई नहीं मिल रही है, सड़कों का बुरा हाल है, पानी गवर्नमेंट की वजह से नहीं मिल रही, जो आम आदमी पार्टी ने किया था उसकी वजह से नहीं। ऐसा था कि इसके अंदर गवर्नमेंट नहीं है, एक तो वो भी रीजन है। दूसरा ये था कि लोगों ने मौका दिया था आम आदमी पार्टी को, उन पे विश्वास जताया था एंड दे हैव बिट्रेड द पीपल। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। बिना एक्सपीरियंस के जो है कोई भी काम करना मुश्किल होता है। आम आदमी के पास एक्सपीरियंस नहीं था, बीजेपी गवर्नमेंट प्लान कर रही है, उनके पास एक्सपीरियंस तो है। आप सोचते हैं कि बीजेपी विल डू अ बेटर जॉब? Actually, the ideal situation is that the state and the center should be of the same party, if we really want work to be done. And in this case, the BJP has an edge and it should come to power. Both the party, our party as well as BJP party, had promised the Delhi people that they will reduce the tariff of BSES. So we only want to see which party can reduce the BSES tariff, because this is the promise they have given to the Delhi people,
and they should do it without giving the subsidy, because I mean, when you give the subsidy and reduce the price, it is again a burden on the taxpayer. So my main concern is that we should vote to a party who can deliver this promise. A party that delivers. What do you think, Mittal Saab? Which party do you like to see to come to power in Delhi? देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती. फॉल्स प्रोमिसेस और टॉल प्रोमिसेस बहुत होते हैं, तो लेकिन जब एक्चुअल में जमीन पे आप डिलीवर कर पाते हैं, वो वाली बात है. अभी आप कह रहे हैं कि आपने एक सवाल पूछा कि आप बीजेपी के पास फेस नहीं है, तो केजरीवाल के पास भी फेस नहीं है. केजरीवाल के अलावा फेस ही नहीं है ना. वो अगर वाराणसी में लड़ेंगे तब भी केजरीवाल, कर्नाटका में लड़ेंगे तब भी केजरीवाल. मनीष सिसोदिया बेचारे या कुमार विश्वास जो है, उन्हें कोई पूछता ही नहीं है. तो बीजेपी के पास एक लीडर है जो गवर्न कर रहा है और इंटरनेशनल लीडर है, तो क्यों नहीं. लास्ट एक पॉइंट में बताइए, मेन इशू क्या होना चाहिए दिल्ली वाले के पास? मेन इशू है कि क्या कहते हैं, जो पार्टी महंगाई पे कंट्रोल कर सके, करप्शन को क्या कहते हैं कम कर सके, और पुअर क्लास और कॉमन आदमी को रिलीफ दे सके. डेवलपमेंट के लिए जो पार्टी आगे काम करना चाहे, उस पार्टी को लोगों को आगे आना चाहिए, उस पार्टी को ही जिताना चाहिए जो लोगों के लिए डेवलपमेंट का काम कर सके. There is no problem which is not there in Delhi. Corruption, water, electricity and sewage. So the point is, even if there is 10% improvement in the overall situation, we will be quite happy. 10% is all that we are asking for. हमें तो स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो चीज की कमी होती है उसी चीज को चाहिए. पिछले 1 साल 1.5 साल से बीजेपी दिल्ली के पास कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो गवर्न कर सके. As you can see, the demands are very basic. All people here want is a good standard of living, a basic government and a good standard of life. But that's all from us this week. Thank you for watching this edition of Cover Story, and we'll see you again same time next week.